Right. Data types in Python. What are the data types that fall in our Python? I mean to say operator. Just ignore this. Numbers, sequence, mapping. These are the three types. These are not actually the data types. These are the type of data that data types fall into. Like numbers, within numbers, we have integers, we have float, like float and integers, both are almost akin to itself, despite being decimal and after digit, the float, I mean to say, stored within it after decimal. And after we have complex, as in math, you might study what are complex, conjugate. These are same, but don't worry. Complex data types are not, I mean to say, not covered within your syllabus. So we can ignore these. Like sequence, within sequence, we have Boolean, we have a string and none data types. None mean you don't have values for now, but in upcoming times, it might be whenever feasible, you have values and you want to store over there. So you may define them as none, like A equal to none. Sequence type like list, tuples, range, like bytes and byte arrays are not very, I mean to say, liable to your course. So we don't wanna look up into this. Mapping to map. Mapping means, I mean to say, connect them. Like connect, I mean to say Delhi to Mumbai, Mumbai to Delhi, and we can say Mumbai to Hyderabad, Ahmedabad, like this, or you can use your city to like map them. It's simple mean to connect them. We can use dictionary frozen sets, but I mean to say frozen sets are not really important for our syllabus, so we can ignore them. Yeah, these are the data types to get uh, we want. I think I have no idea if within lectures these things are covered or not, but there was a question in our GRPA that is literally very important, and these are the concepts that you think you must know to do the questions in exams too. Have you ever I mean to say read about these operator precedence? Operator precedence? No, no. Look, what are the operator precedents? Over here, it is clear by its word that it determines which operations are performed first in expression with multiple operators. Suppose you have an equation that you might solve when you were in 8 or 7 that you have, you do follow the rule of board mass, like bracket off, yeah. But over here, Yes, board yeah. mass is not very, feasible to be used every time. Over here we use a principle of operator precedence. I mean to say this is akin to board mass, but I mean to say this is much more. Uh, this covered much more features than the board mass because it covered like bit manipulation things like or not anything like comparison operators. For now, we just have to understand we just need to understand what is it. So what are operator precedent? Operator precedent is nothing but it determine which operations are performed first and what after that in expression with multiple operations. Any expression which contain multiple operations within it, we have to decide, or we can say Python, how Python compiler actually decide which to do first. Like over here, we have 30 modulo 5, 13 modulo 5. Thereafter, over here, double, like we do divide it, and we want to get the values into, integer. We do use them. Thereafter, multiply. Thereafter, the sign of power. Yeah, and Okay. this is a simple string. So over here, operator precedence, the highest value, or we can say the first expression that will be executed by the Python compiler is one which contain double parenthesis. For now, you can suppose if we wanna give, a small parenthesis over here, yeah, this parenthesis over here. These are the first that will be executed. This becomes 60. 30 to the 60 by the Python compiler because sign of multiplication. Oh, by the way, I would like to ask, have you idea about what are operator, I mean to operator and expressions like plus Yeah, I minus, know the operator. greater than Yeah, as yeah, I know that. Yeah. yeah, that's great. Yeah. So these are the like first of all we the highest the highest value taken by the parenthesis. So There are this is the order. So this is the order we have to the follow, right?
Yeah, this is Like, the order that Python compiler follow, not we have to follow. This is the yeah, order that yeah. Python compiler follow to execute the task. Don't worry about unitary plus minus. These are not, I mean to say, not covered in our syllabus, so we can just ignore them. And over here, multiplication, division, floor division. Look, if you have this is a single, I mean to say, what this is known as, forward or backward slash. I'm often confused with these. Like we can say forward slash. Yeah, this is a forward slash, like it did forward. This is a forward slash. If there is a single forward slash, it wanna conveys. There is a division. If it is a division, and that might give you the value of, I mean to say, float. Like if you do divide 5 by 2, it may give 2.5, which is the value of float. But if you Okay. use this floor division by like this double forward, I mean to say double forward slash, it only give you integer. Like if you do divide 5 like slash 2, it only give you 2. It doesn't give you like 2.5 or something. So the basic difference between division, if you do division, you might get if it is returning, you might get only float values. And if The you do number after so, the number after the decimal, we don't have to write. I mean, it you doesn't don't give have, the number after decimal. in float division. And water modulus, it simply returns you reminder. Addition, Reminder. subtraction, Yeah. first parenthesis, exponential, I mean to say the sign of exponent over here. After parenthesis, this will be executed. And thereafter addition, subtraction, just ignore for now, like bitwise or jot. These are not, you have to study all these stuff, I think, in Python, I mean to say in Java diploma. Comparison operator, like double equal When to there is, compare the value. Yeah. yeah, I have a question. When there is floor division and modulus, which one the compiler follows first? Because uh, according like to the say order, multiplication, like multiplication, thereafter division, thereafter floor division, okay, thereafter okay, multiples. okay, I Or got it. do, or let it be for now. Addition, subtraction, comparison operator, like this. Double equal to, not equal to, logical not, logical and, logical or. Yeah, all right. So over Okay, here, you have to do it by yourself, and observe how it actually work. I'm not gonna give you. I'm not gonna explain all the stuff, but what I'm gonna explain. Like, wait for a second. Over here, and what to do? What to do? Oof, explain all this stuff. I mean, say like comparison operator. If you do print, and if you're gonna ask is one equal to one, it's gonna give you true. If you're gonna ask one is not equal to one, it's gonna give you false. As it return the boolean values either true or either false. If you gonna ask one is greater than one, then it's gonna return no, one is not greater than one. But if we give six is greater than one, so that's true. Akin to all these thing, we yeah. just do. I have understood all the operators, but I'm a bit confused with the not operator. All right, don't worry. We're gonna elucidate that too. Elucidate that too. Just wait and watch what is actually Okay. happening over here. Right. Let me just observe. One is equal to one. Yeah, that's true. One is actually equal to one. True. But what if we have a equal to IITM and a equal to IIT Bombay? I mean, say IITM. Just use IITM. What if we do give a, and I mean to say, what out what out to be its output? What do you think? True, true. Actually true. Why? Because their values were same. But what if Same. you have to actually cover both are equal or not? As because both are stored at different memory locations. A capital A has different memory location. A small A has different memory location. For that, we will cover within our upcoming video. Just ignore them for now.
So let me comment it. By the way, there is one equal to one. Yeah, that's true. What is one is not equal to one? It's just asking each one Mm. is not equal to one. But this is false, na? One is equal to one. Yeah. What if it gonna ask one is not equal to five? Yeah, that's true. One is actually not equals to five. So this gonna give us true. Yeah. So this is the Yeah. not equal to operator. This sign means not and equal to. Simply, you are comparing two things and you are saying that left one is not equal to right one or right one is not equal to left one. So that's all about not equal to. Have you understood? Yes. But suppose what if we have, I mean to say int one. What if we compare this with a and over here too? But prior to that, I think we need to comment extra stuff. The true and false. One is equal to one as it this is the value it contain is one. So over here add to a it became one. So one equal to one. One is not equal to one. It's false. But if we give seven, then it gonna return us true. Yeah, it is Yeah. true that one is not equal to one. Over here it is wrong. One is equal to one. A is equal to 1 because A is 7. Over here, A is not equal to 1. I mean, 7 is not equal to 1, so it returned true. What if we gave 7 in a string? Look, int is doing typecasting over here. We have passed 7 as a string. Yeah, we have passed 7 as a string. But what is actually 7? 7 is a integer. So int change them into integer. Like this is false. This work as actually 2. Yeah, 7 is not equal to 1. So Yeah. that's all regarding this. I think you won't confuse yourself from now. By now. Yeah, Yeah. print 6 is equal greater equal to 1. Yeah, that's one. String of is 1 is equal to I mean, it's a greater than or equal to 1. It is not True. greater to, but yeah, it is equal to 1. So this ought to be true. A smaller than or equal to no, it isn't a smaller than, but it is equal to it. Both of these, I mean to say, greater than equal to smaller than equal to operators to follow the two things. And what are those two things? Let me. You have to just have to guess the what will be the actual output. Yeah, like true, true. Oh, oh, oh. What did we follow? I think till it we have covered our all the comparison, whatever multiplication divisor. Just wait for a second. 5 plus 1, as we know, 6. Oh, sorry, division. 5 into 1, or we can say first 5 plus 1. There are just wait, 5 into, I'm going to say 2. Later we may use 5 divided by divided by of row division. What will the output of all of these? 6, 5 plus 1, 5 to the 10, 5 divided by 2.5, and 5 we do floor division over here, so it give only 2. It just, I mean to say, eradicate the things or from including decimals, the digit that came after decimal. Yeah, and return only true. What if we do divide 10 by 2? Yeah, because 10 doesn't give, I mean to say 10, if you do divide 10 by 2, it have to give 5. And what that 5 will be in a string or float, thereafter 5 is in float. So it is very clear that it doesn't matter if you do divide, if you do division, if you gonna use division operator, that you should not out to, you must not out to, I mean, consider it that if it do divide, I mean to say it, if it do divide completely, we're gonna give integer instead float. No, it will always return float by
I mean to say by using even 0.02. If it doesn't have the actual digit that out became out to be after this one, like over here, if as we did divide 5 by 2, we got 2.5. But over here, we did divide 10 by 2, we got 5 only. So, but what it did, it just add 0 after the decimal. So it always return float values and it always return the values in integer. Yeah. Thereafter, Yeah. I mean to say modulo, what its modulo will be, what its modulo 1. Why 1? If you do divide 5 by 2, like 5 5, I mean to say 2 2s are 4, and there over there only 1 Remain. will be left as remainder. Yeah. So Yeah. that's all. That's all. What are these? I mean to say logical and not, or have you ever, I mean to say, combine these points? No. You have told me that you have covered all the week, the content that was given in week one. Don't worry. Wait. And what is and? And if you gonna give India and Nepal, it means that you have included both India and Nepal. Yeah. Firstly, if you gonna say, brother, if you gonna say India or Nepal, you have included only one. You have two options, either India or Nepal. Yeah, note. What is note? If you gonna say India, not Nepal, that you are sure that you are not gonna cover. You gonna cover only one. You must have to ignore one of them. Like which out to be one of them. Which is which is succeeded by the operator not. I know this might little bit confusing, but don't worry. Like if we wait, just wait for a second. True and true. Look, true and true. Both are what? True. True. True and false. Yeah? True or true. True or false. Look, if you have true at left side of AND operator and true at right side of AND operator, it gonna give you true values. As you are saying, this is also true, that is also true, means both are true. You must need True. both. Yeah, thereafter, if you have true and false, and operator, I mean to say inbound, like both the conditions, it may true or false. If both are true, then only it gonna give you true. If True. either one of them are false, it gonna give you false. So over here, False. true and false. No, you can't consider true and false both. You have to consider only one type of data. Like so, over here, it gonna give us. I mean to say False. false, true or false, true or false. It doesn't matter which one is true, which one is false. At least if one is true, it gonna give you true. At least I'm as I've said, if both are true, it will give you true. But if one is true, it gonna give you true. But True. what if I say false? We'll wait for a second. And false. What False. will the output? Output will be false because those are, I mean to say, both are false. But what if over here we use or instead and false or false? It will give you false False. true. The reason behind that is and operator will give you and operator will give you true only if both are true. True. If Yeah. either one of them are false, it will give you false. But not or operator is not akin to the and operator, as or operator will give you true, doesn't matter both are true or not. Or at least one out to be true. Over here, this is true, or we may say we may make this out to be true, and this is false. It will give you true, at least one out to be true. And in or operator, as I've said, if both are false, it will gonna give you false. Yeah. That I think we have to check all the stuff with our print. Print two.
and true, true and false, false and false, true or true. Wait for a second. Oof. Let us have to comment all this. Yeah, now run. Wait, true and true, both are true. So we got true. True. If any one of them are false, with and gonna give us false. True and false will give you false, false and false. As both are false, for sure we're gonna get false. But in the OR operator, if both are true, it will gonna give you true as usual as and if both are false, I mean to say one of them are false, like false and true or false, you may consider it gonna give you true. One of them ought to be true. It will give you true if one of them, at least one of them ought to be true. And I mean to say if both are false, for sure you're gonna get false. And you know what the not operator do? If you write not true, it will give you false. It just do altercate the value that you have provided true, as you are saying this is true, but what you are saying not true. Like I mean to say, like suppose if you have a chef in your restaurant, yeah, and you are saying no, he's not in your restaurant right now, or you may say he's not available right now, it means that you are lying. That's false. He is actually available. But what if you say false. You say not. And say not. He is available. You are just wait. I'm just conveying myself. Okay. What ought to be the perfect example to convey? Like not false. Wait. If you say he is not, suppose for now, just suppose in restaurant there is a chef that is present in your restaurant. He is still at your restaurant and he is working behind the doors. I mean to say, if you say he is not here, he is not here, he is not here, then you are lying. It ought to be false. But if you are saying he is not Mhm. there, he is not there, he is not there, it means he is here. He is not at his home. As you are saying, he is not at his home, but he is here. That means yeah, it means you are conveying other person that yeah, he is here by I mean to say by wording, by doing shadowing your words. You are just playing juggle. I mean to say by juggling your words. If you are saying not false, it means true. Not false. What you are saying, not false. Yeah, not Yeah. false. What is not true? We just wait for a second. That was we actually have to observe the output. These are the disturbing examples. It might little bit confusing. Oof, भाई चल जा जल्दी. कुछ स्लो भी है. Look, over here false or false, as both are false, you gonna get false. Not false. What happened over here? Not false. You are saying not false, but it is true. I mean to say, uh, not false give you true, Yeah, I got it. not true give you false. It just give you the value by alternate them. Like if true is true, if it is not true, it gonna give you false. So I mean to Okay. say that's all about logical and or and not operator. Just revise all of these, and I'm literally very sure that it will gonna help you at your course syllabus and exams too, because questions are literally very framed on these topics to confuse the student. All right, all Mm. right, all right. So yeah, you understood operator precedence. Thereafter, we have blank strings. What are string? As I have already explained that the strings are something that is covered with, I mean, to single quotes or double quotes, but you wanna use single or double quotes inside that you have to alternate the types of quotes you are using. If you do use double quotes to surround them, then you can use single quotes in between them, or vice versa. Like single line string, as I've explained you, if any string is, I mean to say, fall within the single quote.
अरे भाई, वेट, over here, single line. What about that? Like multiple line. So like this, triple quote you may use to convey yourself or convey your compiler. This is the string of, by the way, I mean to say multiple lines. I think till yet you have understood what actually the strings were. But there are some methods, and I mean to say this is the last lecture of your week one. What mode, the name of lecture? More on a string. Introducing, as I've already introduced you with a string, more on a string. More on a string. What about the more on a string? What we gonna, I mean to say, covered in these topics, more on a string. Look, String as I have slicing. told you, that's great. What do you know about this stuff? I mean to say, slicing, comparison, etc., etc. Please, I mean to say, elucidate your points. About the string slicing, it's about indexing Yeah, the great, string or the integer. So great. if we want to get the first word or first number, we do the string slicing. Like, That's great. and indexing starts with 0 and also with -1. Yeah. All right, that's great. Wait, well, a string. I mean to say, India broke off peace talks with, I mean to say, China. Yeah. Over here, we have Mhm. a string. A string, what is a string? It is a sequence of characters. And each string has an index. What is index? Index is, we can say, a position of the character within that string, within a whole string. Like, I mean to say, slicing, sorry, indexing, it starts from 0. Thereafter 1, 2, 3, like over 0, we have our first character I, then and at, I mean to say 1 and 2, like this. मतलब ऐसा ही कुछ होता है, 1 से लेके जहां तक भी आपके उसकी लेंथ है। तो यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपके, मतलब ऐसा कुछ है। अब वो सिर्फ इसी में So, but लिखा this नहीं होता है। one, या if you write the string 0, we will get the first one quotes, the single quote. We get that one, is it? Or we get I, वी गेट ओनली आई। or we don't count the quote. नो नो नो, we just Okay. count the characters, the character within that, the character within the string, like character one is I, mean to say character zero is one, but our indexing commence from zero. So we do use them as, I mean to say, only as character. So that's all. So as you But have, we do count the all, space in between, right? The space between yeah, India yeah, and yeah, bro. we do count We count that like one. look, like look, Okay. 0, 1, 2, 3, 4, 5, yeah. Just print. We're gonna print, I'm gonna say blank, nothing over here. But what if we print 6? We're gonna print B as well. H. Yeah. So that's all about the string. There is something. There are some operations that your, I mean to say, that your lecturer did. Like if we convert this as, like if we do this command for now. If we do S into S, we'll look up stock uh, for sure S1, S, S2 equal to IITM Canada, ठीक है, S1 into S1, और ये चीज से तो पता है, मैं रन करके देखता हूँ। मैं एरर दे दिया, लेट इट बी फॉर नाउ।
if you do multiply your string with any number, it gonna repeat for that number. Like if you do multiply with 5, to it gonna repeat itself 5 times, 2 times. As over we have used 5, it gonna repeat itself 5 times, total 5 times. At a string 0, s0 we have I, at 1 we have n, and we also do negative indexing. Negative indexing starts from, I mean to say, where our string actually wind up, like a is -1, a is at -1, n is -2, like this, minus minus minus. It we do count from right to left. Have you understood what is the negative indexing? Because it is Yes, literally yeah. I mean to say, Yeah, we very important. start. Yeah, Yeah, okay. we start counting from backwards. Yeah. Mhm. I mean to say, if you do compare for now, just suppose, look, gonna comment all this stuff, like, but wait for now. Like over here, we took a character of 0, I think that's like I, and we did into 5. It means I will be repeated 5 times. So I think, as you know, over here I will be repeated 5 times. I'm gonna like comment this. Over here, what we're actually doing, we're just comparing the just stuff like S, that is capital I T M. Yeah. And over here we do compare with a small IITM, and the string is akin to that, like capital I. We have to observe what will be the output. Over here we got false. For this we got true. Why we got this false? Because there is a case sensitivity issue arises, like it is a small and it is a capital, so both are not equal to each other. And over here, Yeah. as both are equal, we got true. What about less than, or I mean to say greater than operator? Over here we say lectured is less than IITM. How actually Python do comparison by the characters, like it gonna compare the position of The L in initial. alphabet, yeah, and position of Yeah. I in alphabet. If I is greater, then it will gonna give output according to that. If L is greater, it gonna give output according to that. Yeah, that's all about string two. The all stuff that you, I mean, say lecture covered. I have covered all the things. First of all, I meant to say, first of all, ये प्रैक्टिस असाइनमेंट है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको, जब भी पाइथन अप्रोच करता है ऐसे क्वेश्चन को, तो इसकी ऑर्डर होती है, ठीक है। सबसे पहले पैरेंथेसिस वाले ऑपरेशन होंगे, जैसे यहाँ पे ये है 2 into 30 पैरेंथेसिस लगाया, तो सबसे पहले ये ऑपरेशन होगा, जैसे आपने पेंसिल में बोर्ड पास पढ़ा होगा, तो वैसे ही होता है, बट इसमें कुछ थोड़ा अलग है उससे। जैसे पैरेंथेसिस होंगे सबसे पहले, उसके बाद एक्सपोनेंशियल वाले जो ऑपरेशन होंगे वो होंगे लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोट डिवीजन, मॉड्यूलस, एक्सेट्रा, फिर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, फिर कंपैरिजन वाली, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ठीक है। फिर आपका लॉजिकल ऑपरेशन आते हैं, लाइक लॉजिकल नॉट एंड और। आई होप आपको ये सब पता हो, नहीं तो आप हमारी रिकॉर्डिंग देख सकते हो प्रीवियस वाली। और इसे और बेहतर से समझाने के लिए, जो सपोज मैंने जैसा ये भी आया, ये उसके बाद आएंगे एक्सपोनेंशिएशन के बाद, बट इनमें से कौन से पहले आएंगे और ये ऑपरेशन कैसे होगा, आई मीन टू से लेफ्ट टू राइट होगा, इधर से इधर होगा, फिर इधर से इधर होगा। तो इन सारी चीजों को क्लियर करने के लिए मैं देख सकते हैं कि एक प्रेसिडेंस टेबल रखा है। एसोसिएटिविटी बता रहा है कि जब भी कभी ऑपरेशन होगी तो ये लेफ्ट टू राइट चलेगा, ठीक है। आई मीन टू से इधर से इधर, सपोज अगर यहाँ पे कहीं पैरेंथेसिस होता, ठीक है, तो पहले ये एग्जीक्यूट होता, फिर ये वाला पैरेंथेसिस एग्जीक्यूट होता। उसके बाद आपकी अगर फंक्शन कॉल है, फिर स्लाइसिंग हो गई, ठीक है, पैरेंथेसिस के बाद स्लाइसिंग, फिर उसके बाद आपकी एक्सपोनेंशिएशन, बिटवाइज ऑपरेटर वगैरह आप इग्नोर कर सकते थे, आपके सिलेबस में है नहीं फिलहाल। हाँ, बट नेम पता होना चाहिए, मतलब गलत थोड़ी पता होना चाहिए। फिर आपकी ये पॉजिटिव, नेगेटिव, प्लस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, आप इसको बोलते हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट चलती है ये भी। फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फिर मॉड्यूल, ये हाईएस्ट से नीचे, लोवेस्ट की तरफ जा रही है, ये सबसे पहले होंगी। फिर जैसे से नीचे बढ़ रहा है ऑर्डर कम हो रहा है, ठीक है। और फिर बिटवाइज वगैरह है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। फिर मेंबरशिप ऑपरेटर वही नॉट, नॉट इन, इज नॉट है। उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर वही ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, एक्सेट्रा, फिर इक्वलिटी ऑपरेटर, फिर इनइक्वलिटी ऑपरेटर, लाइक नॉट इक्वल टू, मैंने पढ़ा था, रिकॉर्डिंग देख लेना। फिर बूलियन नॉट, यहाँ लेफ्ट टू राइट चलेंगे। फिर उसके बाद एंड, और फिर अगर कोई लैम्डा एक्सप्रेशन है वो सबसे लास्ट में चलने वाली है, सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगी। तो ये सारी की सारी लेफ्ट टू राइट ही चलती है, सिर्फ इसको छोटी एक्सपोनेंशिएशन को छोटी, या फिर राइट टू लेफ्ट चलती है, तो ये पोजिट्स है, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपकी स्ट्रिंग थी, मैंने बताया था कि ये स्ट्रिंग क्या होती है, इसके ऊपर क्या ऑपरेशन हो सकती है, कैसे स्टोर करके वैल्यूज को रिकॉर्डिंग प्रेफर कर सकते हो। फिर स्लाइसिंग पे आते हैं, ठीक है। स्लाइसिंग जो होता है उसकी पहले तो आप ये समझ लो स्लाइसिंग करती है, देखो अगर कोई सब स्ट्रिंग चाहिए, जैसे चेन्नई है, चेन्नई के आपके सिर्फ स्टार्टिंग के 3 से 4 वर्ड्स चाहिए, या तो आप उसे आई मीन उसे इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर लो। अगर आप इंडेक्स के थ्रू एक्सेस नहीं कर पा रहे हो ना, तो वो बहुत टीडियस हो जाएगा। जैसे फर्स्ट इंडेक्स एक्सेस करा, उसे लेकर बनाओ, फिर कीवर्ड्स वाली बनाओ, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो आपके लिए बहुत ही टीडियस हो जाता है। इसी काम को आसान क्या स्लाइसिंग है। स्लाइसिंग होता है आपको पोजीशन बताओ, कहां से स्टार्ट करना है, कहां स्टॉप करना है, ठीक है। और मैं वहां से आपको स्टेप आके दूं, मतलब वहां से मैं आपको लाके दे दूंगा, और ये स्टेप बताता है कितने स्टेप छोड़ छोड़ के चलना है, एक स्टेप छोड़ के, 2 स्टेप छोड़ के, कुछ ऐसा। और ये जो होता है ऑलवेज में, बड़ा कंफ्यूज होता है, जो स्टॉप वाला होता है ना, ये हमेशा एक्सक्लूडेड होता है। सपोज जो आपने बोला भाई 2 से स्टार्ट कर 6 तक चल, वो 6 तक नहीं चलेगा, वो सिर्फ 5 तक चलेगा, ये पहले तक, ये एक्सक्लूडेड होता है, इससे पहले तक चलता है। ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, स्लाइस नोटेशन यूज टू एक्सट्रैक्ट सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग वही एक पूरी स्ट्रिंग है, उसमें से उसकी कोई पार्ट निकालो, जैसे हमने यहाँ से निकाला, तो हम करेंगे क्या कि वो एक सब स्ट्रिंग है। कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, देखो उसने स्टार्ट 0 से करा, 0 इंडेक्स से, और बोला मुझे सेकंड इंडेक्स तक का चाहिए, बट नीले वाला तक का, फर्स्ट का क्यों, क्योंकि ये वाला जो का स्टॉप वाला होता है ये एक्सक्लूडेड होता है, इंक्लूडेड नहीं होता, एक्सक्लूडेड होता है। 0 पे एफ, फिर यू मिल गया, 2 से 5, फिर यहाँ से लेके 5, 5 तो है, तो ये 4 तक चलेगा, तो यहाँ से ये आ गया। जब आप कुछ ऐसा देते हो, यहाँ कुछ नहीं देते हो, ब्लैंक छोड़ देते हो, फिर कॉलम देते हो, फिर ये देते हो, इसका मतलब है कि भाई स्टार्टिंग से शुरू कर और 4 तक ले ले। इसने स्टार्टिंग से शुरू करा, 4 तक ले ले, मतलब यहाँ तक ले, लास्ट वाला तक एक्सक्लूडेड होगा। जब आप कुछ नहीं देते ना यहाँ ना यहाँ, इसका मतलब होता है स्टार्टिंग से भाई शुरू कर ले और एंड तक का पोजीशन ले, ये स्टार्टिंग पोजीशन एंड तक ये पूरा का पूरा देगा। जब आप ऐसा बात करते हो 1 से शुरू करो -1 तक,
तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से शुरू करो और ये माइनस वन आपका हो जाता है। अगर नेगेटिव इंडेक्सिंग अगर आपको पता हो तो ये माइनस टू हो जाता है, ये माइनस थ्री, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा, इसने ये दे दिया। और अगर हम बात करें आपके स्टेप की, तो स्टेप बेसिकली कुछ नहीं है, बस स्टेप का ये वो बताता है कि कितने आई मीन कितने स्टेप को छोड़ के आगे बढ़ना है। जैसे फॉर नाउ सपोज आपने आपने बोला होता कि मुझे पूरा दे दो और आपने आई कॉलम लगा के टू बोल दे टू, तो ये हर एक दूसरा एलिमेंट आपको देता कुछ ऐसा, ठीक है। ये हर एक दूसरा एलिमेंट देता। पहला एलिमेंट तो ये होगा कि जीरो से शुरू कर रहा है, कुछ है नहीं, जीरो से शुरू करेगा, फिर इसको नहीं देगा, छोड़ देगा इसको, ये अब हर दूसरा एलिमेंट देगा, ये दे देगा, फिर इसको छोड़ देगा, ये दे देगा। वहीं अगर ये तीन रहता तो हर तीसरा एलिमेंट देता, मतलब पहले तो ये देता, फिर एक दो इन दोनों को छोड़ के इसको दे देता। तो ऐसा कुछ होता है ये स्टेप का। तो आई होप आपको ये समझ आया कि कैसे क्या होता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स और रिप्लाई दिखा देता हूँ। फॉर नाउ मैंने एक वेरिएबल लिया str स्ट्रिंग का, एंड इसमें टुगेदर, टुगेदर मैंने, ठीक है, टुगेदर, टुगेदर लिखा, आईटी मैंने लिख दिया फॉर नाउ। अब बताओ इसकी स्लाइसिंग करनी है, प्रिंट कर दो आप इसकी स्लाइसिंग str कहां से जीरो, मतलब अगर देखो आपने यहाँ जीरो दिया या कोई चीज दिख तो ठीक है, वहां तक लेगा। बट अगर आपने यहाँ कुछ नहीं दिया, आपने यहाँ कुछ नहीं दिया, तो ये बिल्कुल यहाँ से लेगा। और वैसे ही अगर आप लास्ट में कुछ नहीं दोगे, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग वन दे दिया, वन से लेके पूरा लास्ट तक यहाँ एंड तक लेगा। और फिर अगर आपने कुछ दिया ही नहीं, ना यहाँ कुछ दिया ना यहाँ कुछ दिया, बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दिया, ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ, ठीक है। तो फिर उन केसेस में क्या होगा, ये पूरे के पूरे जो ये स्ट्रिंग्स वगैरह ये उसको अपने अंदर ले लेगा। और अगर मैं स्टेप की बात करूँ तो कुछ ऐसा हो सकता है, आपने बोला जीरो, आप यहाँ जीरो दे सकते हो, अगर कुछ नहीं दोगे तो उसका मतलब ऑटोमेटिकली ये होता है कि वो आप बिल्कुल आई मीन जीरो से स्टार्ट करेगा। फिर यहाँ कुछ नहीं दोगे तो वो बिल्कुल एंड तक चलेगा। और स्टेप देते हो, आप बोल रहे हो मुझे हर दूसरा एलिमेंट चाहिए, पहले तो टी ले ले भाई, फिर जीरो छोड़िए, फिर ची लेना, हर दूसरा एलिमेंट, फिर देखते हैं क्या है। देखो जीरो से लेके फोर्थ तक का यहाँ तक का लास्ट एलिमेंट ये एक्सक्लूडेड होता है, इसको नहीं देता। फिर यहाँ मैंने कुछ नहीं दिया तो यहाँ जीरो से फोर्थ तक देगा इनिशियल से, फिर वन दिया मैंने यहाँ कुछ नहीं दिया, वन से लेकर लास्ट तक का इसने दिया, तो ठीक है ना, वो जी टी यहाँ पे ना यहाँ दिया ना यहाँ कुछ दिया, तो ये पूरा का पूरा दे देगा। अब आपने यहाँ कुछ नहीं दिया मतलब अब बोल रहे हो भाई जीरो से शुरू कर, फिर आपने यहाँ भी कुछ नहीं दिया तो बोल रहे हो फिर से मतलब लास्ट तक यहाँ हर सेकंड एलिमेंट से मान लो, तो पहला एलिमेंट टी हो गया, ठीक ठीक है, फिर एक एलिमेंट छोड़ के दूसरा एलिमेंट जी हो गया, फिर जी आ गया, फिर जी के बाद एक एलिमेंट छोड़ के टी हो गया। अगर आप यहाँ से कुछ थ्री दे देते तो आपने से पहले वो दो एलिमेंट छोड़ देता, देख लो ना, टी और ये आ गया, टी आया, फिर ये दो एलिमेंट छोड़ के फिर ये आया, फिर ये दो एलिमेंट छोड़ के फिर ये आया, फिर ये दो एलिमेंट छोड़ के फिर ये आया, ठीक है। तो आपको समझ आया कि एक्चुअली आपकी स्लाइसिंग कैसे होती है, प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो अब हम चलेंगे, हमारा वीक वन वाइंड अप हो चुका है, ठीक है। तो अब हम करेंगे अपनी प्रिपरेशन, आई मीन टू से प्रैक्टिस असाइनमेंट्स देखेंगे, ग्रेडेड देखेंगे और जीआरपीएस की मैं आपको बताता हूं। फिर आपको कोई डाउट हो तो लिटरली यू आर फ्री टू आस्क, आप पूछ सकते हो कि डाउट्स वगैरह, ठीक है। तो फिर आई मीन से अब आप देख पा रहे हो ये आपकी प्रैक्टिस असाइनमेंट, ठीक है। तो फिर जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, हां ठीक है। ये प्रैक्टिस असाइनमेंट देखो, सबसे पहले क्वेश्चन बोला प्रिंट करने को, तो ये देखो कंफ्यूज मत होना है कि भाई ये दिया क्या आपका इंटीजर है, तो फिर तो कैलकुलेशन करना होगा इसमें, नहीं, आप देखो गौर करना है यहाँ पे, ये अनबाउंडेड है एक आई मीन से एक सिंगल कोट्स के द्वारा, वेट मेरी आवाज क्लियर, ठीक है, एक सिंगल कोट्स के द्वारा क्या है अनबाउंडेड है, ठीक है। और फिर जब आप यहाँ पे देख पाओगे जब सिंगल कोट्स के द्वारा अनबाउंडेड है तो फिर ये तो स्ट्रिंग हो जाएगा, जो जैसा वैसा वैसा ये रिटर्न कर देगा आपको, तो वो ये दे देगा। ये नहीं हो सकता कि जब आप स्ट्रिंग को प्रिंट कर दोगे डबल कोट्स नहीं आ रहे होंगे उसमें। चलिए आगे चलते हैं। और नाउ अब इस क्वेश्चन को देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रिंट इन सबको प्रिंट करने बोल रहा है, मैं बताना इसको सराउंड किया गया है डबल कोट्स से, ठीक है। और जब डबल कोट्स से सराउंड करते हो तो आप सिंगल कोट्स स्पेशली बीच में मेंशन कर सकते हो, बस ऐसा ही होना चाहिए, ये भी डबल कोट्स से और ये भी अंदर वाला डबल कोट्स, ऐसा नहीं हो सकता कि वो एरर देगा आपको, वो भी कर सकते हो आप, आगे देखेंगे इसके कैरेक्टर्स की हेल्प से, तो सही हो जाएगा, तो तब बहुत ईजी होगा। फिर अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो फिर आप यहाँ पे देख पाओगे, आप यहाँ देख पाओगे ये स्निपेट आपको दे रखा है, ठीक है। और फिर आपको बोला जा रहा है कि ये जो आउटपुट आएगा ये कैसे आएगा, तो देखो क्या हो सकता है आंसर को देखो, ये हो सकता है क्या, ये कैसे हो सकता है भाई, ना यहाँ पे आपने कॉमा डाल रखा है ना कुछ, तो ये तो एरर देगा, नहीं हो सकता। ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ये तो ऐसे प्रिंट करेगा वन ऐसे कुछ ऐसे लाइन में प्रिंट करेगा, वर्टिकल, ये भी नहीं हो सकता। ये हो सकता है, हाँ हो सकता है क्योंकि कॉमा डाल रखा है, ये भी हो सकता है क्योंकि आपने इसे एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में डाल दिया, तो ये तो एमएन से बहुत ही इजीली आपके हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर आपका ये क्वेश्चन रहा वही ऑपरेटर प्रेसिडेंस वाला, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद से ट्राई करो एक बार, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप ये देखो कि कौन सा आंसर आपको आ रहा है, तो ये तो पता है ये स्ट्रिंग होगा टू, टू का भी एमएन से टू का सी स्ट्रिंग होगा, ठीक है, टू का हो जाएगा। तो देखो सारी की सारी टू में यहाँ सी दे रखे हैं, ऑप्शन बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं भाई इसके। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं सबसे पहले इजी वाला टारगेट, हाँ ये भी ट्रू है और ये फॉल्स दे रखा है, तो इसका जो भी आएगा आई मीन टू से इसका जो भी आपका आएगा इसका जो भी आपका आउटपुट वगैरह आने वाला है वो आएगा आपका बूलियन, ठीक है। तो बूलियन आपका टी हो जाएगा, ये वाला बूलियन हो जाएगा, बूलियन हो जाएगा आपका टी, फोर का टी हो जाएगा बूलियन। तो अभी दो क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, सारे के सारे फोर में टी दे रखे हैं इन्होंने। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका इंट आएगा, आप चेक कर सकते हो क्योंकि भाई फ्लोट तो तब आएगा ना जब यहाँ डिजिट डिवीजन बट यहाँ फ्लोट डिवीजन कर दिया गया, तो इसका भी निकल गया ए का और वन का स्ट्रिंग आएगा एसटीआर, सॉरी आई मीन से बी आएगा, वन का भी यहाँ देखा है और यहाँ देखा है, ये दोनों ऑप्शन में से फाइव में डिफरेंस है। जब सारा निकल गया तो बचा क्या सिर्फ एक फ्लोट, तो सीधी सी बात है फाइव बाई ए हो जाएगा फ्लोट। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया, कोई आपको इशू आए ना समझ आए तो आप पूछ सकते हो अपने डाउट्स को, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं इसमें। यहाँ एक रखा है एक वर्ड है मतलब इंग्लिश का एक वर्ड है, तो उसमें से बोला है, तो मेरे कहने का मतलब पहला कैरेक्टर जो वर्ड वन का होगा, ठीक है, और जो दूसरा कैरेक्टर होगा लास्ट लेटर से, बिल्कुल लास्ट से आई मीन से जो आप कोई नया वर्ड बनाना है जिसमें पहला जो कैरेक्टर होगा वो वर्ड का फर्स्ट लेटर होगा और जो लास्ट कैरेक्टर होगा वो वर्ड का लास्ट लेटर होगा, ठीक है। एज्यूम वर्ड एटलीस्ट वर्ड में कम से कम तीन कैरेक्टर आप ये एज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ देखो ये बोला है जीरो एलिमेंट, ठीक है, ये बोला है आपको वर्ड का जीरो आई मीन से जीरो कैरेक्टर और फर्स्ट कैरेक्टर, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि क्या बोला सेकंड कैरेक्टर जो होगा वो लास्ट लेटर, लास्ट लेटर कैसे एक्सेस करते हैं माइनस वन वाली इंडेक्सिंग से, ये सही है। फिर ये देखते हैं ये तो सही है, फर्स्ट होगा लास्ट, यहाँ पे वर्ड का जो भी लेंथ होगा उसमें वन माइनस कर लो तो समझ लो वो भी लास्ट आपको दे देगा, तो ये भी सही है, ये सही नहीं हो सकता क्योंकि इसने लास्ट को पहले ले लिया, ठीक है। तो आपको समझ आया। फिर हम आगे देखते हैं ये क्वेश्चन आपके आई मीन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये तो सिंपल सी बात है, तीन एक्स वाई जेड तीन इनपुट या एवरेज निकालना है, तीन को जोड़ के तीन से डिवाइड कर दो, फ्लोर में आपका आ जाएगा आंसर। गौर करना फ्लोर में आएगा क्योंकि यहाँ पे डिवीजन दे रखा है क्वेश्चन में, और यहाँ कुछ नहीं है, तो वर्ड्स थे वर्ड वन वर्ड टू आपको पता होगा, इनपुट जो दिया आपको ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट एसटी फॉर्मेट में डाल देगा, भले ही आप तीन डाल रहे हो लेकिन वो एसटी फॉर्मेट में डाल, ठीक है। तो पहले आपने 10 डाला 20 डाला तो दोनों एसटी, दोनों को जोड़ के 10 आई मीन से 1020 बनाती। और फिर ये क्वेश्चन है आपका, ये अगर आप गौर करते हो तो मैंने आपको क्या बताया था, ऑपरेटर प्रेसिडेंस में जो एक्सपोनेंट्स होती है वो चलती है आपकी राइट टू लेफ्ट, मतलब इधर से इधर इधर से इधर की तरफ चलेगी, ठीक है। तो देखो थ्री टू द पावर जीरो वन हो जाएगा, टू इंटू वन टू आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप हमारी प्रैक्टिस असाइनमेंट तो खत्म होगी, चलो अब करते हैं ग्रेडेड असाइनमेंट पे, ग्रेडेड असाइनमेंट पे मूव करते हैं। तो आज हम ग्रेडेड असाइनमेंट शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ईजी होगा आपके लिए देखना कि किस टाइप की एक्सप्रेशन में सबसे पहला क्वेश्चन है जो बिल्कुल आपको फ्लोट दे देगा क्योंकि यहाँ डिवीजन हो रहा है, फ्लोट डिवीजन में बताएंगे, फ्लोट किया फ्लोट को जब वन साइड करोगे तो ऑब्वियसली बात है फ्लोट ही मिलने वाला है आपको, ठीक है।
और फिर अब आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो यहाँ देख सकते हो ये ट्रू होगा, फिर ये भी ट्रू होगा, फिर ये भी ट्रू होगा, तो बूलियन टाइप की आपको वैल्यू मिलने वाली है। फिर यहाँ देख सकते हो ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 10 टू द पावर 3 डबल एक्सपोनेंट का यूज करते हैं कुछ ऐसा, ठीक है। फिर 9 टू द पावर 3 कुछ ऐसा, फिर 12 टू द पावर 3 1 टू द डबल एक्सपोनेंट का कुछ। अब ये ऑप्शन आपको सही लग रहा होगा, ये गलत है क्योंकि वर्ड कट ऑफ यहाँ इक्वल टू दे रहा है, ये बोल रहा है ये एक्सप्रेशन के आंसर और ये इक्वल टू है। और सिंगल इक्वल टू का यूज किया जाता है वैल्यू डिफाइन करने के लिए, और डबल इक्वल टू का यूज किया जाता है वैल्यू को कंपेयर करने के लिए। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा, ये डबल इक्वल टू वाला, ठीक है। और फिर ये क्वेश्चन आप याद रखें E1 E2 और बूलियन, सो E3 नॉट E1 और E2, देखो E1 और E2। आगे बढ़ते हैं, ये देखो नॉट बोल रहा है तो सब कुछ हो जाएगा। एट लास्ट दोनों को कंपेयर कराइए, प्रिंट करेंगे दोनों का क्या होगा। तो बहुत सीधी सी बात है कि ये हमेशा ट्रू है फॉल्स है क्या, वो पूछा जाता है। इट इज ट्रू, ये ट्रू है ओनली इफ बोथ E1 E2 हैव सेम वैल्यू, E1 E2 की सेम वैल्यू। सपोज करो दोनों ट्रू है और E3 इक्वल टू हो जाएगा नॉट ट्रू, मींस ये तो फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ बोल रहा है नॉट ट्रू फॉल्स, ये दोनों फॉल्स फॉल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल टू आएंगे। वेट इससे थोड़ी कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन। सपोज करो आपकी E1 ट्रू है, E2 भी ट्रू है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। ये क्या बोला नॉट ट्रू, मतलब यहाँ फॉल्स देगा, F देगा। और करना दोनों के दोनों ट्रू है तो उसने फॉल्स दिया। और फिर यहाँ देखते हैं ये बोला नॉट ट्रू, E1 तो हमने बोला ट्रू, ये यहाँ फॉल्स हो जाएगा, ये यहाँ फॉल्स हो जाएगा, तो ये फॉल्स देगा आपका। दोनों फॉल्स देगा, तो दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो आपका आई मीन से सेम आंसर आना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हो अगर ट्रू है दोनों तो दोनों की वैल्यू सेम हुई नहीं। Wait, एक सेकंड। बोला इट इज ट्रू इफ बोथ, इफ एंड ओनली इफ बोथ E1 E2 हैव सेम वैल्यू। सपोज E1 और E2 दोनों का दोनों ट्रू है तो ये आपको फॉल्स मिल जाएगा। यहाँ पे नॉट ट्रू है ना, तो फॉल्स फॉल्स ये फॉल्स मिल जाएगा। तो इन दोनों को जब कंपेयर करोगे तो ट्रू देगा। बट ये ऐसा थोड़ी हो सकता है जब दोनों की वैल्यू सेम और दोनों की वैल्यू फॉल्स होती फिर तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा ये भी। तो आप इसके अंदर कुछ भी डालो, कुछ भी लिटरली चारों में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, कुछ भी ट्रू या फॉल्स हमेशा आपको ट्रू ही देगा। चेक कर सकते हो डाल के। सपोज आपने इसके अंदर ट्रू डाला, आगे इसके अंदर फॉल्स डाला, तो और है और इसमें से एक ट्रू है और एक ये फॉल्स है, ये आपको क्या देगा ट्रू। नॉट ट्रू बोल रहा है तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर आप यहाँ देख सकते हो ये ट्रू है और ये फॉल्स है आपका। यहाँ बोला नॉट ट्रू तो अपोजिट हो जाएगा, ये वाला आपका एफ हो जाएगा, ये वाला आपका ट्रू हो जाएगा। नॉट ट्रू बोल रहा है तो फिर ये आपको फॉल्स दे देगा, ठीक है। तो भाई आप कुछ भी डालो आपको हमेशा ट्रू ही मिलने वाला है। यहाँ पे दोनों कंपेयर करोगे तो उसमें बस सेम है। बस यही था, इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं, आपको फर्दर कंफ्यूजन हो तो फिर आप उसको एग्जांपल दे सकते हो, जब दोनों ट्रू होगा तो भी ट्रू होगा, दोनों ट्रू फॉल्स होगा तो भी ट्रू देगा, तो ऐसा कुछ एक्सप्लेन कर देता है। यहाँ देख सकते हो ये बोल रहा है आपको E is a Boolean variable, E जो है वो क्या है, एक Boolean variable, consider the following sequence of expression, नोट ई डबल नोट ई। देखो E सपोज करो एक बार के लिए ट्रू है, ठीक है, तो नोट ई बोल रहा है तो वो फॉल्स देगा। फिर फॉल्स दिया, फिर उसने नोट बोला, फिर वो ट्रू हो गया। मतलब जब आप उसको इवन टाइम्स नोट लगाते हो तो एक बार नोट लगाए तो उल्टा हो गया, आपने फिर से उसमें नोट लगाया, कुछ ऐसा। देखो ट्रू था, आपने बोला नॉट ट्रू, ये फॉल्स हो गया। अब फॉल्स को भी बोल दो नॉट ट्रू नॉट फॉल्स, तो ये ट्रू हो जाएगा। मतलब जब आप दो बार नॉट लगाओगे तो ये फिर अपने वापस उसी वैल्यू में वापस आ जाएगा। और यहाँ बोला जा रहा है भाई 500 टाइम्स लगाया इसमें, फिर इवन वैल्यू है, ठीक है। फॉल्स के ऊपर फर्स्ट टाइम में फॉल्स रहा होगा, सेकंड टाइम लगा तो ट्रू हो जाएगा। मतलब फॉल्स के ऊपर आप इवन टाइम्स चलाओ तो एट लास्ट आपको ट्रू देगा, तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन स्लाइसिंग का, आपको स्लाइसिंग समझ आ गई। पूछ रहा है कि ए और बी जो है मतलब क्या कौन सा ए और बी क्या पोजीशन होगी इसके लिए एक्सप्रेशन सही हो जाए। मतलब आपको ये आउटपुट चाहिए, उसके लिए ए क्या लोगे बी क्या लोगे, मतलब कहां से स्टार्ट करोगे कहां से स्टार्ट करोगे, आपको इंडेक्स देना होगा, ठीक है। 0 1 2 3 या 4 से यहां से स्टार्ट करोगे, आपको 1 आ रहा है और फिर 9 आ रहा है आपका यहाँ पे। तो काउंट कर लोगे आप, जो भी आपका इंडेक्स होगा वो डाल दोगे, जैसे बी आ रहा था 30 पे, 9 आ रहा है आपका यहाँ 13 इंडेक्स में। और फिर उसके बाद ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है आपका, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन है आपका। अभी देख लेना, बहुत इजी है, बस कंपेयर करना है, और कंफ्यूजन तो कुछ। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ देखो 2 टू द पावर 5 क्या होता है 32, ठीक है। 32 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 16, 16 को 2 से 8, ठीक है। 8 को कॉल करना, 4 डिवीजन है, 8 को 2 से 4, 4 को 2 से 2, 2 को 2 से 2, तो ऐसा को ऐड कर दो। 8 टू 10 16 14 20 क्या, 8 टू 10 वेट वेट वेट, जब 2 को 2 से करोगे तो ये 1 हो जाएगा। हाँ 8 टू 10 16 14 20 30 प्लस 1 30, ये इसका आंसर है। अब आपको समझ आएगा आगे होगा। तो अगर हमने अपना ग्रेडेड असाइनमेंट पूरा का पूरा कवर कर लिया है, बात रही जीआरपीएस की, तो फिर जीआरपीएस को हमने नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है। ऑलराइट।